उम्र को कैसे धोखा दिया आपने? सर रात में फ्रिज में सोती हूँ. सुपर कूल. और दूसरे ये कि असल ज़िंदगी में तो आप पुलिस ऑफिसर नहीं बनी, लेकिन पर्दे पर पुलिस ऑफिसर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक के रोल्स आपने किए. तो अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या आप फिर भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगे या सिनेमा में ही रहना चाहेंगे? सर बस 1-2 को धोने का चांस मिल जाए, फिर उसके बाद वापस फिल्म्स कर लूँगी. Subscribe and click the bell icon for television updates. पहली चीज़ ये नमस्ते सबको. पहली चीज़ ये है मैडम, ये मार धाड़ वैसा हम सोचते नहीं, क्योंकि उसके पीछे अगर इमोशन हो तो सबको लगता है कि करना है. सो इट इज़ मोर लाइक अ बैटल में मार धाड़ बैकग्राउंड को चला जाता है, पर्पस बहुत हमेशा आगे आ जाती है. जो भी वॉर करते हैं और ये करते हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट एक्शन ऑन स्क्रीन, एक्शन फिजिकली, मेंटली भी बहुत एक्शन है. जो उसको चाहिए, उसका प्रॉमिस जो उसने दिया है, उसके लिए जो भी टक्कर आती है, जो भी मुश्किलें आती है, सब पार करके वो माँ का व्हाट यू से हर एक ड्रीम को पूरा करने की मेहनत कर रहे. एंड व्हेन वी से एक्शन, इट इज स्टाइलाइज्ड. You know, it is not something where you feel awkward. Or I always do films where I feel I can watch it with my family. Family audience should enjoy. Only then that number you will get, and that is the main purpose. But as he rightly said, the presentation, or we focus on masses. सीटी बजा के, ताली बजा के, नाच के थिएटर में सिनेमा देखना है. और उसके बाद भी there should be a strong content. If you see the thought process in this film, every dialogue will have a thought process where you can relate to any profession. So there is so much of writing. And in previous question you asked about the dubbing and this thing. I really appreciate that you have noticed that, because more than Kannada dubbing, our team has spent more time on concentrating on dubbing, because we need to respect the nuances of every language, and if we have to touch their heart, so we have to be right. So a lot of people have worked hard, Dr. Suri, and in every language there are a few people who have really worked hard for that. हमारे ओरिजिनल रॉकी के साथ काम करना आपको कैसा रहा? बहुत खुशी हुई, because you know, you get to learn a lot from him, the way he dedicated, the way he committed himself in spite of there was extreme conditions. जैसे हम शूट करते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि इट इज़ नॉट नथिंग. सब बोलते होगे ना शूटिंग में पिकनिक जैसा था, आराम से मज़ा करके शूटिंग किया. आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वेर इन दैट मोड, बिकॉज इट वॉज सो डिमांडिंग. एंड आई थिंक ही सेट अ एग्जाम्पल. दैट इज़ समथिंग विच वॉज which I will have it for a very long time. I'll remember it for a very long time. This vision was made before we started chapter 1. Chapter 1, first half, we have only told half the story. So we are not going out of context from what we have shown in chapter 1. When you watch the movie, you'll understand that, you know, the scale or the new characters that have been introduced, it probably could have just been one movie that you were watching. So when you talk about the emotion, the mother's emotion is probably primary for this movie, and that has been very consistent for us. When you talk about the scale, it was always meant to be like that. There was no separate planning for just for chapter 2. बेस्ट पार्ट ये फिल्म में इसकी कहानी है, इसका इमोशन है, और मेरे को स्टार्स हैं, यश है, श्रीनिधि, रवीना जी, और सबसे बड़ा जो हीरो है वो प्रशांत है, जिसने इसके बारे में सोचा. I don't know, I don't look at it as a pressure, it's a pleasure, you know. सबको entertain करना. So more number of people, if they like it, that is where we concentrate. Of course numbers will come. What I believe is, once the movie is released, and if that works, if they like it, then they will promote the movie more than me. So then it is left to them how many people will reach it. So it's all this thing in initial stage pay. But yes, of course we are expecting a huge number. I never think like we have to break this record or that record. I'll only think about the potential of the industry or potential of what we have done.
एंड रिकॉर्ड बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, रिकॉर्ड तोड़ने का सोचता ही नहीं मैं. नया रिकॉर्ड बनाना है, मतलब everybody should do that. Whoever comes after us also, they should pass that thing and set a new benchmark so we can aim at bigger things. That's how I look at things. I always believe it is director's vision. And as an actor, you are only as good as your movie and as good as your director can imagine you. So today, if you see this Rocky or this KGF, it is Prashant's imagination, and he has started that thing. And he loves his heroes so much, so he presents us like that. So if there is any director who can present me the way audience want to see me or my fans want to see me, why not? I don't have a difference between the director from Hindi or Tamil or Telugu. It's just that they have to do a movie keeping everybody in mind. If they can do it, why not? I think when we started writing the script, we had written down Sanjay sir's name for when we started penning for chapter 2, we wanted somebody who was very powerful for the role of the Prime Minister, and I wanted somebody who was proper Hindi speaking and somebody who was mass. And we found the best mass Prime Minister that you will probably get to see on screen. Raveena, what was your reaction the moment they asked you to be on board and to play this character? Hello. Well, I think मैं जब प्रशांत से मिली KGF 1 ख़त्म ही हो रही थी उस समय, और ये उस KGF 1 के दौरान एक कंटिन्यूटी था जो KGF 2 में जाता था. तो KGF 1 के बारे में मैं इतना सुन चुकी थी ऑलरेडी सबसे, चाहे वो रितेश हो, फरहान हो या अनिल हो, उनसे इतना सुन चुकी थी कि मेरी एक होता ना, एक गुंजाइश ही नहीं होती कि नो आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस. इट हैड टू बी दैट आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी. एंड ऑब्वियसली KGF 2 में देखेंगे आप कि प्रशांत के साथ काम करना, आई थिंक इट इज़ जस्ट हर एक आर्टिस्ट को जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं, तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू आई थिंक फॉर एनी एक्टर टू वर्क विद अ टीम लाइक दिस एंड विद प्रशांत ऑफ कोर्स. I don't think it is just Adira and Rocky. The conflict is multi-layered. There is a conflict within himself, within Rocky itself. That is something that I want all of you to explore when you come to see this. Adira represents that big conflict for everybody. You know, that big, those big moments that you want to see in cinema. And there is a conflict with the Prime Minister also. There are a lot of people who bring in conflict. So basically we are talking about an empire. And you know, fighting for an empire is not easy. If there are only 2-3 people who want that empire is not worth it. So we have worthy adversaries as we go along in the movie, and I'd love for all of you to watch it. And मैं समझती हूँ कि आई थिंक आवर इंडस्ट्री हैज़ ओनली ग्रोन. एंड खुशी है, जैसे यश हर बार कहते हैं कि अब हम पैन इंडिया हो गए, हमारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फ्यूज़ होके इंटीग्रेटेड होके एक इंडस्ट्री बनती जा रही है, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्गर फोर्स. तो वो एक बहुत मज़ेदार बात है. पहले तो हम जाते थे बॉम्बे से करने फिल्म साउथ में, चाहे वो तमिल हो या मलयालम हो या तेलुगु हो, लेकिन अब एक जैसे एक लिटरली साथ जुड़ गया है, और वो बहुत ही मज़ेदार बात है. उसके अलावा जिस तरीके से नंबर्स अब बढ़ गए हैं, आई थिंक वन हैज़ टू इवॉल्व विद द टाइम्स. एंड मैं ज़रूर ये कहूँगी दैट आई एम वेरी लकी एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम स्टिल रेलिवेंट, कि मैंने वो फेज़ भी देखा और ये फेज़ भी देख रही हूँ, और खुशी की ही बात है. एंड मे आवर इंडस्ट्री ग्रो बिगर एंड स्ट्रॉन्गर ऑलवेज. मैंने जब प्रशांत और यश मेरे पास आए थे, उसी टाइम मैंने बोला था कि ये तूफ़ान होगा और आग लगेगी. तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, और आप लोगों का प्यार और पब्लिक का प्यार देखकर मुझे यही लगता है कि जो मैंने सोचा था सही होगा. Firstly, I want to thank you and lot of YouTubers, और वैसे लोग बहुत सारे प्रमोशन किए KGF Chapter 1 में. I saw there was one guy called Bollywood Crazies, उनका भी. You're here? Thank you, man.
when we came to Bombay or when we came here, not many people knew about us, but I think Ravi and Surya, I remember your name, yeah, because it was very sweet. जिस तरीके से ने आप लोगों ने हमारा फिल्म को तब promote किया ना, and I would want to remember you guys like this lot of YouTubers in every state, every language. I don't know for what reason they all supported us with open arms. And आपके दिल में, if I can have my territory, that is my territory. Thank you.